topic for the same is, can Ayush practices can be leveraged for pluralistic delivery of healthcare and well-being? And the panel eminent speakers for the same are Dr. Surakshit Goswami, Chief Spiritual Officer, Times of India Group, New Delhi. Professor Dr. R. Meenakumari, Director of National Institute of Siddha. Dr. Neeta Mahesekar, Director of National Northeastern Institute of Ayurveda and Homoeopathy. Professor Tanuja Manoj Nesari, Director of All India Institute of Ayurveda. Professor Dr. Bhardwaj, Vice Chancellor of Noida International University, and Professor Dr. Pankaj Gupta, Professor and Executive Director of Center for Ethics, Spirituality and Meditation of OP Jindal Global University. And Dr. Pankaj Gupta will be the session moderator for the same panel. Over to you, sir. Thank you. Yes, Dr. Pankaj. Okay. I thought, we have to just, we're waiting something. Am I audible? Yeah, you are audible, sir, and all our speakers have joined over here. Yeah. Okay. Just a minute. Yeah. So, very good afternoon to everyone, and it is very nice to be part of this summit on healthcare, and a lot of very important topics have already been covered. And as you know that we have been hearing so much about alternate medicine, including AYUSH, Siddha, yoga, and so many important, including Unani as well, that what kind of role they can play in care. And as such, we know that India has been a knowledge economy, and we also keep hearing about a lot of miracles, which we talk about, that certain patients were being given like a no-show, and you are just to prepare for death, and those people go to these alternate medicine, and finally you see that they are saved. Not only they are saved, but also they are able to live a very good holistic life as well. And there's a way in our ancient knowledge and wisdom, and on which the AYUSH Paddhati has been based upon. And I'm very happy that we have got such an illustrious panel. And Chandanji, I would really like to compliment you, and so that we have Goswami ji, who is the Chief Spiritual Officer in Times of India Group. So welcome to you, Goswami ji. R. Meenakumari ji, who is the Director of National Institute of Siddha. So welcome, Meenakumari ji. Neeta ji, who is Director of Northeastern Institute of Ayurveda and Homoeopathy. So welcome, ma'am. And we have Dr. Bhardwaj, who is the Vice Chancellor, Dynamic Vice Chancellor of Noida International University. So welcome all the panel, and of course, Chandanji is here. So I would like to say that in these ancient methods, and we have seen that what is the health is known as a swasth. And when you dissect this word swasth, we know it is swa me sthit. Somebody who is sthit in the swa. And that is how you are swasth. And the moment you move away from swa, that is your own core self, then you can say you become aswasth. And that is how the vyadhi and other kind of problems are there. And also there has been a lot of discussion about 4 basic elements of life, that is ahar, vihar, vichar, and vishwas. Ahar means, what you eat. Vihar means what is your lifestyle. Then vichar, what kind of thought process do you entertain? And, the vishwas, sometimes that you are what you believe you are. So sometimes your thought process, and I was having a discussion with Goswami ji, and he mentioned that a lot of, psychosomatic diseases and other things, a result of, what you keep thinking, what kind of burden from the past you carry every time. And I was president of a health university, that is AIIA, and we also had a tie with Johns Hopkins. And we know, and there was a research came out, and it mentioned that almost 88% of the life we are not living in the moment. It is either in the regret of the past or anxieties about the future. And if we are somehow able to live life in a more holistic way,
And so the whole thing can change. And one is, of course, you spoil the health and then you say how you can be cured. And second is that by using meaningful practices and adopting homeopathy, AYUSH, and healthy living, and as I said, Ahar Vihar, Vichar, and Vishwas, so that you are living a holistic life and you do not need any such treatment that way. We shall be discussing on these topics as we go along. So, in order to proceed further, I would like to firstly go to Dr. Goswami, and his work is very powerful in terms of the inner journey and AYUSH. So, I'd like to understand from you, Dr. Goswami, that what you think, what is the scientific basis behind these techniques? And when you talk about the alternate way of healing and what kind of the role these techniques can play, and also in what way these things can also be adopted in our day-to-day life. So I'd like to hear from you, Dr. Goswami. Please. Over to you, Dr. Goswami. Thank you. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सर. हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से जो योग है वो हमारे जीवन पर अपना प्रभाव डालता है. असलियत में यदि हम देखें तो ये पूरे का पूरा ब्रह्मांड प्राण शक्ति के आधार पर कार्य कर रहा है. यहां ऐसा कुछ भी नहीं है जो शक्ति के बिना हो रहा. जब पूरा ब्रह्मांड शक्ति से गति कर रहा है तो ये शरीर भी उसी शक्ति से गति कर रहा है. और शरीर में वो जो शक्ति है वो हर सेल, या जिसको योग की भाषा में 10 प्राण कहा जाता है, उसके आधार पर कार्य कर रहे हैं. पूरे शरीर में प्राण शक्ति फैली हुई. उस प्राण शक्ति के आधार पर शरीर के सारे क्रियाकलाप हो रहे हैं. हमारा देखना, सुनना, बोलना, सूंघना, खाना, निगलना, हृदय का धड़कना, रात का सो जाना, सुबह का उठ जाना, हमारा चलना, हमारा सोचना, विचारना, निर्णय लेना, जो भी कुछ हो रहा है सब प्राण शक्ति से हो रहा है. और जब ये प्राण शक्ति पूरे शरीर में सही प्रकार से संतुलित होकर, बैलेंस होकर बहती है तो समझो कि व्यक्ति स्वस्थ है. और जब ये प्राण शक्ति कहीं इंबैलेंस होने लगती है और शरीर के जिस हिस्से में इंबैलेंस होती है वहीं पर रोग शुरू हो जाते हैं, व्याधि शुरू हो जाती है. तो ये प्राण को जब हम जानते हैं, समझते हैं, तो फिर हम योग की चिकित्सा कर पाते हैं. हम देख पाते हैं कि शरीर में यदि कोई रोग है, यदि कोई डायबिटीज है सपोज, तो हम देखेंगे कि अच्छा पेट में जो पेनक्रियाज है उसमें बीटा सेल्स जो हैं वो सक्रिय नहीं हो रहे हैं. तो इसका मतलब है कि वहां पर जो समान प्राण है वो सही प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है. अब हम उस समान प्राण को ताकत देने के लिए कौन से योग की सूक्ष्म क्रियाएं हो सकती हैं, कौन से आसन हो सकते हैं, कौन से प्राणायाम हो सकते हैं, ध्यान की क्या टेक्निक्स हो सकती है, तो सबको साथ लेकर सबको साथ लेकर फिर एक अभ्यास क्रम तैयार किया जाता है जिसका उद्देश्य केवल और केवल अपने समान वायु को ताकत देना होता है. और जैसे ही वो समान वायु पूरी तरह से स्वस्थ होकर कार्य करना शुरू करती है वैसे ही पेनक्रियास एक्टिव हो जाता है. एक छोटा सा उदाहरण है, ऐसे पूरे शरीर में सारे 5 के 5 प्राण जो हैं वो इसी तरह से कार्य करते हैं. तो नासिका से लेकर हृदय तक प्राणवायु काम करती है, हृदय से लेकर नाभि तक समान वायु काम करती है, नाभि से लेकर पैर के अंगूठे तक अपान वायु काम करती है, गले से लेकर सिर तक उदान वायु और पूरे शरीर में फैली हुई है व्यान वायु. तो इन 5 प्राणों के आधार पर योग की चिकित्सा की जाती है, क्योंकि 5 प्राणों के आधार पर शरीर का स्वास्थ्य खड़ा हुआ है. तो ये इन प्राणों को कैसे ताकत दी जाए, तो इसलिए योग के अनेक उपाय हैं, तरीके हैं. फिर हमारा दिन भर का आहार क्या हो, हमारा व्यायाम इसके अलावा क्या हो, दिन भर की एक्टिविटी क्या हो, रात को सोने का तरीका क्या हो, नींद कैसी हो, हमारे कर्म किस तरह से हो, जिससे ये प्राण सही प्रकार से कार्य करना शुरू कर दे. हमारा भोजन प्राण पूरक हो, प्राण से भरा हुआ होना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो डेड फूड है.
तो जितना प्राण से भरा हुआ भोजन होगा, जैसे हम सूर्य के नीचे हैं तो प्राण शक्ति हमें प्रचुर मात्रा में मिल रही है, हम आकाश के नीचे हैं तो प्राण शक्ति प्रचुर मात्रा में मिल रही है, हम प्रकृति के नजदीक हैं तो प्राण शक्ति प्रचुर मात्रा में मिल रही है, हम जमीन से जुड़े हुए हैं तो प्राण शक्ति प्रचुर मात्रा में मिल रही है, मन को पूरी तरह से शांत किए हुए हैं तो मन से जो प्राण शक्ति है जो बेकार में ड्रेन हो रही थी वो कनेक्ट हो जाती है आकाश तत्व से। इस तरह से 5 तत्वों से बना हुआ शरीर 5 तत्वों के साथ प्राण शक्ति को इकट्ठा करता रहता है। यदि हम उसको अलाइन कर दें तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो इस तरह से यदि हम अपने दिनचर्या में योग के अभ्यासों को शामिल करें, जो विशेष रूप से आयुष कहता है कि योग एक ऐसी पद्धति है जिसके माध्यम से हम अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं, क्योंकि शरीर प्रकृति से आया है और आयुष की सब पद्धतियां प्रकृति से आ रही है। योग के सारे आसन 84 लाख आसन, एक एक आसन किसी ना किसी योनि से आया है। कोई सर्पासन तो कोई वृश्चिक आसन तो कोई वृक्ष आसन तो कोई ना कोई योनि है। प्राणायाम में हवा हम सही प्रकार से व्यवस्थित तरीके से प्राणों को व्यवस्थित कर रहे हैं। अपने शरीर को प्रकृति के साथ अलाइन किया जा रहा है। ये अलाइन करने की जो तरीका है वो योग ने अलग अलग आसनों के माध्यम से और प्राणायाम के माध्यम से एक साइंटिफिक तरीके से हमारे ऋषियों ने रिसर्च करके हमको उपहार स्वरूप दे दिया है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उस योग को किस तरह से जीवन में अपना लें। क्योंकि आसन 84 लाख हैं तो सारे तो हम करेंगे नहीं, मेरे लिए कौन से जरूरी है बस वो हम छांट लेते हैं। जैसे बूफे लगा हो तो मेरे लिए खाना कौन सा है, हम वो छांट लेते हैं थोड़ा सा। तो ऐसा नहीं कि केवल आधा घंटा सुबह को योग कर ले तो काफी है, बल्कि योग के छोटे मोटे अभ्यास यदि आप दिन भर अपने साथ रखें तो दिन भर हम योगमय जीवन जी सकते हैं। योग का मतलब जैसे अभी डॉक्टर गुप्ता जी बता रहे थे कि स्वस्मिन तिष्ठति इति स्वस्थः, स्व में स्थित हैं तो स्वस्थ हैं और स्व से टूट गए तो अस्वस्थ हैं। स्व मतलब मेरा स्वरूप, मेरी चेतना, मेरी कॉन्शियसनेस, मेरा आत्म तत्व। कैसे जुड़े उससे हम, कैसे अपने स्वरूप को अनुभव करें, जो गीता का दूसरा ही अध्याय है। तो जितना जितना हम अंतर्मुखी होते जाते हैं उतना हम स्वस्थ होते चले जाते हैं, जितना हम बहिर्मुख होते हैं उतना अस्वस्थ होते हैं। स्वास्थ्य का खजाना कहीं अंदर छिपा है, हम ढूंढते कहीं बाहर है, वो होता कहीं अंदर है। तो ध्यान उसी ही अंतर्मुखी यात्रा का एक तरीका है। प्राणायाम अपनी ऊर्जा को पूरी तरह सूक्ष्म करके संतुलित करने का एक तरीका है। तो योग का अभ्यास, योग की प्रैक्टिसेस जोड़ देती हैं हमें अपने ही साथ, और जैसे ही हम अपने साथ होते हैं वैसे ही हमारा शरीर सही प्रकार से काम करना शुरू कर देता है, मन अलाइन हो जाता है, प्राण बैलेंस होकर बहना शुरू कर देता है, बुद्धि के निर्णय व्यवस्थित होने लगते हैं। अब सब कुछ अलाइन हो जाता है। अब कहीं भी कोई जो डिस्टर्बेंस हो रही थी वो पूरी तरह से, चूंकि हम अपने विवेक को पकड़े हुए हैं, योग साधना हमारी बुद्धि को स्थित प्रज्ञ कर देती है और हम स्व में टिक जाते हैं और स्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन दिन भर के काम भी जरूरी है, सब कुछ करना है, तो क्यों ना छोटी छोटी टेक्निक्स के माध्यम से अपने से जुड़ते रहो। यूं तो ध्यान की 112 विधियां हैं। एक छोटी सी विधि, पहली विधि भगवान शंकर जो विज्ञान भैरव तंत्र में कह रहे हैं कि आती जाती सांस को अनुभव करना शुरू कर दीजिए। तो दिन में कभी भी कर सकते हैं। आप वॉक कर रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, आप नहा रहे हैं, आप ड्राइविंग कर रहे हैं, आप बातचीत कर रहे हैं, कोई स्ट्रेस हो गया है, रात को सोने जा रहे हैं, सुबह उठे ही थे, कुछ भी कर रहे हैं, सांस तो चली रही है। 21,600 बार सांस तो 24 घंटे में चल ही रही। जैसे ही आप श्वास के साथ जुड़ते हैं आप स्वस्थ होने लगते हैं। जैसे ही श्वास के साथ जुड़ते हैं, मन में जो हलचल थी, जो तनाव था, जो क्रोध था, झल्लाहट थी, उद्विग्नता थी, जो स्ट्रेस बढ़ रहा था, उसी समय हमारा मन एकदम शांत होता चला जाता है। क्योंकि चले चित्तम चले वाते चले चित्तम, चित्त के
जब वो हलचल में है तो इसका मतलब वात हलचल में है, और यदि प्राण को साध लो तो हमारा मन सध जाएगा। तो योग की ऐसी छोटी छोटी टेक्निक्स जो हम अपने जीवन में यदि अपनाएं तो आप पाएंगे हम अपने मन को पूरी तरह से शांत रख सकते हैं, दिन भर शांत रख सकते हैं। बस ध्यान ले आना है अपने सांसों पर, कब आई कब गई। जैसे ही इस प्रक्रिया में हम जुड़ेंगे आप पूरी तरह से पाएंगे कि कुछ अंदर का आराम, एक शांति, एक सुकून के साथ आप जुड़ते जा रहे हैं। और उस सुकून के साथ जुड़कर जब जो भी करेंगे, आप भोजन करेंगे तो बड़े प्रेम पूर्वक करेंगे। जो गीता में बोलता है कि बल, बुद्धि, आयु, आरोग्य और प्रीति को बढ़ाने वाला भोजन वो तब होगा जब भोजन तन्मयता से होगा, लीनता से होगा। योग के आसन में आप श्वास के साथ जोड़ लीजिए, आप आसन के साथ जुड़ जाएंगे। आप वॉक कर रहे हैं, अपने आप को श्वास के साथ जोड़ लीजिए, आप प्रकृति से जुड़ जाएंगे। आप श्वास के साथ जुड़ तो जाइए, आप देखिएगा प्रकृति से हमारा जो शरीर का संबंध है वो श्वासों के माध्यम से ही तो है। केवल और केवल ये जो श्वास है इसने जोड़ा हुआ है, और यदि इसको बैलेंस कर दिया हमने, जो प्राणायाम और ध्यान की टेक्निक्स हमको सिखा रही हैं, बस समझो कि हम अलाइन हो गए हैं प्रकृति से और एनर्जेटिक हो गए हैं, और हमारे शरीर की उम्र लंबी होती चली जाएगी क्योंकि हमारा मन शांत हो गया है। मन शांत है तो शरीर स्वस्थ होने लगता है। बहुत ही बढ़िया, रियली नाइस। गोस्वामी जी, आपने इतना अच्छा सेशन और आपने जो अपने विचार व्यक्त किए उनका बहुत ही ज्यादा अभिनंदन है। तो हम लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग कोई मेडिटेशन सेशन अटेंड कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके पास दोबारा आएंगे और आपसे ये भी हम सीखेंगे कि अपने डे टू डे लाइफ में, जैसे आपने बताया कि कैसे हम शांत हो जाएं, कैसे अपने हम अंतर्मुखी हो जाएं, एंड हाउ वी कैन टेक इट फॉरवर्ड। तो वी विल अगेन कम बैक टू यू। थैंक यू सो मच गोस्वामी, truly appreciate। थैंक यू। So I would like to now go to my next speaker, Dr. Meenakumari ji. Meenakumari ji, are you here? Dr. Meenakumari, are you here? Yes, sir. Yes, sir. Okay, can you, yeah, please. So I know that you are an expert in the Siddha method, and you've done a lot of research in this area. So we would like to know your views about it, that what kind of work is being done under Siddha, and you as a director of National Institute of Siddha, how and what kind of role it can play in creating a pluralistic way of medicine, and especially in terms of, the treating the chronic diseases and so on. So can you please enlighten us with that, Dr. Meenakumari? Thank you. Thank you, sir. First of all, I would like to convey my gratitude to invite me here with a very huge delegates from various fields of our country, and I am very happy to meet them in this forum, and I am watching all the way from the beginning, and it's going well, and knowing about all the areas you have covered in this forum, and your aim is very clear. You have covered all the portions, and in this forum I want to register our system. This is Siddha system is one of the ancient system in India, especially in southern India. It is originated as ancient as Tamil language, because in old classical Tamil literatures, which contains medicinal quotes and tinctures of verses in some old classical literature like Silapadikaram, Tolkapiyam, and Agananuru, Purananuru, like so on. So this is one of the ancient system, and I want to clarify one thing here. Siddha is as Ayurveda. Many people thought like this because Siddha and Ayurveda has some similarities, but Siddha has some unique higher order medicines, some systematic, scientifically defined versus in healthcare provisions, and scientifically defined medicinal preparations and preservations, and even Siddha system teaches to originate the health and well-being from the core of the soul.
So Siddha's aim itself is to bring a mankind, bring a human into a higher version. This is the aim of the Siddha. The term Siddha or Siddhi means to attain a higher goal. Even yes, normal people, when he has some disease or some normal birth, can attain a higher version in their life path, life journey. So this is what Siddha means. And according to your question, Siddha is scientifically derived, scientifically, systematically integrated with, can be integrated with in any form of medicine system, for medicine systems which is available in our country, which is allopathy and Ayurveda, Unani, or any traditional system of medicine. Because we have a huge experience over this pluralism, because we have in our campus, we have basic medical science faculties, teaching faculties, modern medicine faculties for our PG graduates and PhD graduates, and we have comparative research oriented curriculum for our PGs. And we are carrying out some research proposals, both the modern aspects as well as Siddha aspect, and we adapt some scientific guidelines to design and to perform our research titles. During COVID, we have initiated some clinical trials also through this integration. Our research-oriented proposals are based on the scientific guidelines like CTRI registration and ethical approval from our institutional IEC committee, like so on. So we have a higher possibility in our system to be collaborated with any system, even modern system and any other AYUSH systems. And second thing, we have higher scopes in treating the challenging, life-threatening, chronic lifestyle disorder diseases like cancer, obesity, hypertension, cardiac diseases, PCOS, and so many diseases, lifestyle disorders. We are having large scopes in food and lifestyle modifications. Our guideline says, which one of our guideline, which contains so many food and lifestyle modification catalog to be carried out in our life journey, even from the childhood and for the adolescent people and adult people, and even for ladies. They have segregated all the guidelines to each and every stages of life to follow the food pattern and lifestyle patterns to live like a healthy human. So these quotes are seen in our NEIAH Vidhi Ozhukkam, which is written by Thereyer, one of the sage Siddhar, 18th Siddhar, Thereyer, who wrote the verses. So these type of guidelines which can save our life from the NCDs, non-communicable diseases, if we follow the food pattern and lifestyle patterns. So we took the guidelines as a Bible, as our Bible. So there are a lot of scientifically determined, systematically determined food chart, lifestyle modification charts, and everywhere. As per Siddha system, health is how health is defined. Means this is not the absence of disease. Health is not the absence of disease. This is the holistic and the wholesome awareness in the mind and activeness in the body and achievement in the soul can be defined as health. So Siddha defines the wholesome healthiness, mental, physical and spiritual well-being
then only the human can complete his life journey. So, like so on, our system is also a holistic system, which not only deals with the physical ailments and also the mental ailments, and to improve the human's possibility. And nowadays, we are in the very scientific world, and AYUSH also insisted us to carry out all the traditional practices into a scientific way, so that only people can be people can easily understand, and we can prove our efficacy and prove our beneficial effects to the society in a scientific manner. So, Madam, I have one question to you. yes, sir. If you can. One is, we talk about the medical pluralism, where we talk about that certain diseases, we can also combine the Siddha method as well. So what is your view on that? Because this is getting very big popularity these days. So what is your view on this? Actually, the medical pluralism, we can tell as integration and interdisciplinary approach towards any disease. For example, we can take cancer. Nowadays, we see varieties of cancer and very frequent cancer inputs in our OPD also, and everywhere in any OPD, we can find the incidence of cancer is very high. So approach maybe people maybe from cancer disease, we can integrate some holistic approach from yoga and holistic medicines, which can be beneficial and supportive to the patients. From Siddha, we are also having some very good higher order medicine, which can be effective in first and second grade of cancer patients. We can treat these patients without any complications, contraindications, and we can improve their quality of life, and we can improve their life expectancy also. For example, you may have heard about Dr. Matthew, one of your renowned oncologist from Kottayam, from Kerala. He practiced cancer patients from 60 years. From 60 years, when the very few years of starting his career, he integrate Siddha system of medicine with allopathy to treat the cancer patients. He has treated in his lifespan more than 10,000 patients. All the 10,000 patients were treated with allopathy drug along with Siddha drug and some other Ayurveda drugs. Most of the patients, 80% of the patients, even from the terminally ill patients, he documented the very good results for life expectancy, quality of life, and in the early stages, they can prevent from the contraindications or improving a lot when treated with plain allopathic, singly allopathic patients. He compared those cases, those allopathic doctors, they left down all the patients. They are not fit for treatment, and they will die even after 6 months, 3 months, like that. So those patients came. So yeah, I think I got your point. But one problem which has been there in India, that these practices are not very well documented and also not created the kind of research which even the West believes. Yeah. So of course. That is the reason sometimes they feel it is more of a quack kind of a thing. Sometimes it happens, sometimes it doesn't happen. So I think what India and people like you should also do, that how we can publish in top tier journals and how to get these things, also published in a very scientific way. So, sir, we are trying to look after all the 10,000 cases which Matthew Doctor documented from his practice. We are looking for the possibility to publish a paper which can be in the integral part of Siddha and allopathy. Some documents are missing and some documents are not available because the huge duration. It took 40 years documentations. So there is a scope
because we can integrate these people and we can define our proposal in a scientific manner, and we can get CTRI and ethical clearance, everything. After that, we can integrate in a scientific way. In a particular duration, we can complete the trial. After that, we can go for publication in an indexed journal. Okay, ma'am. Yes, okay, sir. Thank you very much, ma'am. I will again come back to you because okay, sir. So we'd like to go to other speaker also, and thank you so much for your inputs. Now, I'd like to go to Dr. Uma. Are you there? Or Neeta ji? Or Neeta ji, you are here. So, Neeta ji, I'd like to ask you that, as regard the Indian education is concerned about these alternate way, and what do you think that what should be done to improve the quality of education? And also we, as I was talking to Dr. Meenakumari ji, that we do a lot of great things, but sometimes we do not market it well. And sometimes, that kind of a knowledge creation which is there, then knowledge storage and then dissemination. But the basic thing of knowledge storage itself is, there is some problem. So on these things, what would be your view, ma'am? Okay, Namaskar. Good afternoon. I am expressing my gratitude to all the management who have organized this. And we got an opportunity and a dais to speak out. As per Dr. Pankaj Gupta, I would like to say, in the basic education, it is Indian system. As I come from the faculty of Ayurveda, so it is in India everywhere, right from the kitchen, Ayurveda starts. But you asked me about education, but it happens so that we all know because of the invasions, because of our language distortions, it has happened that we lost out on our language, which was a common, that is Sanskrit from across the country. And with all these things, no doubt, we have definitely benefited to put up as good English-speaking people. And globally, we are doing well because we are able to communicate. But in that, it has so happened after Lord Macaulay's inputs for education system in India. I would say that few of the things we have lost as a regime, as a custom, and this is how our education system has been put to an end. So here it happens so, if we can get the inputs of our traditional science right from class 1, so this education would definitely would help. This is what I would feel, that the introduction of daily dietary regime, as I can put, Ayurveda aims at not only the disease part, it goes with swasthasya swasthya rakshanam arturasya vikara prashamanam. So that is mostly a preventive science, how best you can groom your body, not only physically, but mentally also. So maintaining health, swasthasya swasthya rakshanam and arturasya vikara prashamanam. So everybody is well versed with this verse in Ayurvedic circles. But as part of education, many of us who are educated, we know that in our kitchens, we have fenugreek, we have hing, asafoetida, we are using the famous turmeric, but how its uses we know, but the putting into practice, that comes differently. So I think the education, primary education should be introducing Ayurvedic system, the customary system, wherein we have 3 constitutions, and we all know Ayurveda doesn't boast about balanced diet. So balanced diet is not a cup of tea of Ayurveda, where every individual is different, and we would like to project how best we can give a health system through education is by adopting Ayurvedic education from the primary level. Let them understand what are the dietary regimes. It is a disciplinary way of life. Only when we introduce in the education system yoga as well as dietary regimens. As per India is tropical country, the geographical terrains are different. You don't get the same food adoptions from Gujarat to Northeast, from South to North, it varies. So for example, I would like to say pickles, curds are more popular in the South. But once you go up, our coastal Gujarat, chance is more because of the region. So how best we can adopt into diet to maintain health is by educating people right at the primary level. So customary Ayurveda has to be understood.
constitution-wise, what diet, and Ahara, Nidra, Brahmacharya. These are some principles which are in Dharma Sutra. Today, lifestyle adoptions have become very different, and what we have to adopt and we used to get as a part of our tradition and civilization from home, like every household had this. After sunset, the metabolism goes down. It is written in Dharma Sutra that after metabolism, for example, you have to sleep after 3 hours. Now we don't sleep, and definitely pressure on the thyroid. How best we can educate our youth by not being awake beyond that time is by giving the primary education of health, how best to maintain your body. Like Ayurveda says, Dharma, Artha, Kama, Moksha. There are some periodic things, how to follow Dharma by maintaining your intellect, and the physical through yoga, and the intellect should be coming from primary level. So the Gurukul system was there, where the Guru used to say everything, and all these have been distorted now. So this is one thing, what type of diet and how you maintain your lifestyle was important. This can be given footage only by boosting and adopting at primary level. Then only they can understand the importance later in their teens. So it is detoxification is another aspect which nobody knows. Dharma, Artha, Kama, Moksha. How moksha is adopted by not be getting, like Swabhavik Roop say old age is going to come. But how best you can postpone by not having specs, by not growing your hair, by maintaining your health by detoxification method after 25 years. But people do not know what is Panchakarma and detoxification. They try to gain knowledge at the age of 50, 60, which is of no use. So this can be best done by maintaining education in this regard at earlier stages, so that our youth can get more benefited by adopting. After 25, every person has to go seasonal detoxification so that they can maintain their life with longevity, as well as enjoying the pleasures of life throughout without being diseased. So this is the message of Ayurveda. I think until and unless we put into our educational system at the basic level, people will not understand. Yoga is an exercise for them, but yoga is not exercise. It is about moral ethics, pratyahar, asteya, all these things have to be explained at a primary level only. So thank you so much, sir. I was saying that, ma'am, you have really given a very good talk, and you have given us a lot of very great insights. Right from the time, like from the kitchen to also you shared about the ahar, nidra, brahmacharya, the right kind of messaging is also required. But also you see that the way some people understand what is nidra, what is really yog nidra. And if you have a yog nidra of say 45 minutes, it is equivalent to 4 hours of sleep. Yes. They'll say, oh, it is fashionable. Sometimes I am sleeping only 2 hours and they feel pride about it. And they do not know how it is costing their life and how the internal organs are getting disturbed. It is fashionable. I deal with so many students. They say, I'm sleeping at 4 a.m. and I again start at 6 a.m. We saw, this famous South Indian star who died, because you cannot stretch your body beyond a certain level. You need to really love your body. And if you do not love your body, nobody else is going to be there. And you are in this world only through your body. Maybe you keep doing and running after so-called items, the money and fame and all that. And somebody gave one very interesting thing I want to share with you. One of my mentors said, he was sharing about me that, Pankaj, you got this Fulbright, and globally you have been. So like, 1, then 0, 0, 0, there is 1 and there are so many zeros you keep adding in your life. Then he said that, what is this 1? 1 is your health. If this 1 is down, then all the zeros are meaningless. So I always believe that in all our education system, students should be told to love themselves and also spend time. Like, in the morning, what, Goswami ji was sharing about, how you can do some pranayama, focus on the breathing, and also inner journey, the dhyana. There is a gana, jnana, and dhyana, and how we integrate as a part of life and how it can really be so powerful to us. Ma'am, before I go to the next speaker, I have one more question to you. Yes. Question is, that there are a lot of doubt being created on the practices and also the quality of education, because we have not done enough advocacy and those scientific research we have not published. So what should be done in this regard, ma'am?
That is my question. Yes, sir. Rightfully said that research, again, Anusandhan. So already we believe Ayurveda comes from Apta Vachan. The saints who did not have any more, nirmoha, tapo jnana balenaye. तो तप के ज्ञान के बल से, सत्व के आधार पर, जिनका निस्वार्थ भावना से, जिन्होंने आपके समक्ष आयुर्वेद रखा है, so हम उनको आप्त वचन लेके चलते हैं. So there is no questioning that the scientific thing, what sutra they have given, is wrong. It is only the disciplinary way of life that which we have forgotten. So आपको बताते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठ, वहां pineal glands अच्छे होते हैं, ज्ञान, intellect is bright. As the sun comes, the metabolism goes up. So when once the research is there that yes, metabolism goes up, then only we believe. But in Ayurveda, जो सूत्र रखे गए हैं, we already know that they have बहुत ठोक बजा के उन्होंने रखे हुए हैं, so we adopt that. One thing is that for the matter, the world understands the language of research. Okay, how best a scientific paper gives them the evidence-based research, what we have to give it to them. So in this case, sir, I would like to, I'm very sorry to say, the language which they understand is different from the language we put in. It doesn't mean that Ayurveda Sutra is wrong. For example, sir, I would like to say, when we say, जो कम है, उसमें गेहूं है, गेहूं ऐड किया, तो समान से समान की वृद्धि और विपरीत से उल्टा हो जाता है. मान लो आप डिहाइड्रेट हो रहे हैं, रनिंग कर रहे हो, so you want a glass of water. That means body has lost water content. जल गया है तो आपको जल चाहिए. ये सिंपल एग्जांपल है. तो इसी के बेस पर हमारा पूरा साइंस है कि जो कम है उसको बढ़ाया जाए, जो बढ़ा हुआ है वो कम किया जाए. And as per वात पित्त कफ, as I said, no two people are same. जीनोम में सिर्फ 5% people come with single प्रकृति, they are combined प्रकृति. So इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कस्टमरी है. तब when एक स्टैटिस्टिक्स रखा जाए तो स्टैटिस्टिक्स के माने बहुत अलग पड़ता है आयुर्वेद. तब रिसर्च के लिए उनको हमारी भाषा ही समझानी पड़ेगी कि we have this constitution, the season, the day, night. Then only they can understand, sir. I'm very sorry to say, evidence based होना चाहिए, लेकिन मेरा यह वैयक्तिक मत है कि इसको समझाने में इंटरडिसिप्लिनर ही लेना चाहिए. फिर भी उनको ये समझने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा आहार विहार, डे नाइट आदि समझना चाहिए. क्योंकि एग्जांपल दे सकते हैं कि एरोमा थेरेपी अब आया है. हम ये कहते हैं कि पित्त प्रकृति वाले को अच्छा सुगंध लेने से उनका माइंड अच्छा रहेगा तो बॉडी अच्छा रहेगा. तो एरोमा थेरेपी जब वेस्ट से आता है एविडेंस बेस्ड करके, देन वी एग्री. बट when it comes to mantra chikitsa, when it comes to yajna chikitsa, where our people have told janapadodhvans, environment के लिए भी कहा है. तो environment ठीक करने के लिए हर एक घर में यज्ञ होता था, अग्निहोत्र होता था, सूर्योदय सूर्यास्त पर. वो नहीं होता है. तो अब हम एनवायरमेंट को कैसे ठीक करेंगे? उसके लिए रिसर्च करके भी मतलब नहीं होता. वी स्टार्ट दिस अगेन एंड प्रूव कि हाउ दीज ड्रग्स पर्टिकुलर फॉर्म and how Google is going to help the patients of arthritis, how Vacha is going to help, Acorus calamus will help a patient with Unmad. So all these are sinusitis. So these things, again, interdisciplinary research will help. Our people have to learn our language, sir. I'm very sorry. नहीं, बहुत ही अच्छा मैम. Thank you so much, Neeta ji. I appreciate your confidence that, you know, we need not to go to their level, rather they should come to us. Yes, sir. So I really appreciate your point. But you see that we can also follow a balanced path wherever we can yes. paper. It's also yes, sir. But we are what we believe we are. So thank you so much. Yes. Thank you, sir. We have Dr. Uma ji. Uma ji, are you there? Yeah, I'm very much here. Okay. So welcome, Dr. Uma ji. So I can't see you, but I'd like to ask you the question that, as you know, that the AYUSH practices, how they can be related with the medical pluralism, and how you know there's kind of the rare and chronic illness in the patients. What are your views, ma'am? And also, you can, since you're also part of NIMS, which is a top hospital,
and a big university which you are leading at this moment. So what would be your view on these thoughts, your thoughts, ma'am, Dr. Umaji? I'll just start my videos to thank you all for inviting me for this forum. Dr. Pankaj Gupta and Mr. Chandan Anand. He is the CEO of the ArdorComm Media, Pune, and all the panelists. Yes, ma'am. We can hear you. I'll have to stop the video, otherwise my quality of voice will go bad. Yeah, this is a very interesting topic. And when we talk about, as our Honorable Prime Minister, he talks about the new India for the youths, new India for women, for poor. Then we should think about, along with the new India, we should talk about the healthy India. And how can you make the healthy India? Because all the panelists, those who are here, they are the specialists of all those areas which I'm going to talk about. We have to strengthen our own traditional system, which can play a very significant role. That either I talk about the homeopathy or I talk about Ayurveda, yoga, neuropathy, Unani, which all comes into AYUSH. So we have to really talk about it. That represents a pluralistic and integrative scheme of health. It's very important. If we talk about the NHP 2017, I am sure, National Health Policy, everybody must have gone through 2017. That also stresses upon on the potential of the AYUSH. Because if I go way back to 5,000 years and talk about the Dhanvantri, who used to be the physician to the gods, that time the allopathy wasn't there. The birth of the allopathy took way back in 1810 or somewhere around. And before 1810, how the treatment was taken care. And India is a hub. We talk about the Himalayas. We talk about the Jadi Booties and all. India is a hub and center for it. And I'm so sorry that when we talk about the curcumin and so many other things, the America comes and snatches all these things from us, and we Indians fail to, acknowledge our own system. So I think this is the time when I talk about, it is a time that we really need to work on a integrative manner. We need to the education system. When I talk about the NEP 2020, now I have gone through for the medical sciences also. I can talk about that if we go in a very integrative manner, the education system, or where I can have the all-inclusive of pluralistic approach, the homeopathy, Ayurvedic, yoga, neuropathy, allopathy, everything. I do not support that because, as you know, in all these sciences, we do not have the when we talk about these molecules, we really need to go for a lot of clinical trials and test for these molecules, which we have from the plant sources, medicinal plant sources and all. We need to establish it. We need to give a support to the system, because during the time of COVID, I heard that a lot of criticism was there for Baba Ramdev. No, why should we criticize it? Why should we criticize any system? We should just think how we can associate the all system we can bring together, change our education system. Allopathy should also be there. I think we'll have a synergistic effect and a very robust system in place. I always suggest that we should really start working on it. I do not say that for the terminal diseases where the allopathy can take care, definitely we must go for the allopathy. If we talk about the pandemic today, when the pandemic came 100 years before, say in 1918, it again continued for 2 years. Now we can say we have a well-defined medical science in place. Still COVID took 2 years' time. When first that pandemic came in 1918, even your antibiotic wasn't there. The antibiotic was coined in the year 1920.
By Alexander Fleming, 1920, the first penicillin came into the existence. So we should start working in this. I worked on many medicinal plants which has a antimicrobial activity, anti-helminthes activity. The only thing is lacking in our country, we really do not have the critical analysis of these molecules and the proper documentation, as you said, as well as the proper clinical trials are missing in the system. We really need to go about it. Today we talk of, I'm a molecular biologist and a biotechnologist. We have the computational biology in place through which we can really go for such a science which is, we can club a wet lab with the computational biology and can have better results. Like I worked on the NNK and my paper got published into the tobacco associated carcinogens. And my paper got published into Nature. So the basic science, if we understand, either it is homeopathy, Ayurveda, yoga, neuropathy, Unani, allopathy, we really need to understand this is a time, let us build an integrated healthcare system must be integrated where AYUSH system work alongside with the conventional medicine. That's all I want to speak today. Very, very nice. Umaji, your talk was very powerful, very precise, and we really would like to thank you for your inputs. And I think most of the questions which you wanted to address, we are also able to complete them, and we are also well within the time. And only one thing I'd like to add here that about the promotion of this whole AYUSH system of medicine. And India can be the world leader because... yes, definitely. Yeah, so we should... We are the strength of it, but I do not know why are we not acknowledging it? Why we are ignoring it? What we should do for allopathy, we know for these terminal diseases, when you're in a terminal stage, definitely it can be taken care by the allopathy. Sure, ma'am. And you already have a medical college. So I think you... a scholar like you can take a lead in this regard, and I know I'm going to integrate every system with the other sciences, definitely. Sure. As per the NEP, completely switching over to the transdisciplinary research now. Ji, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. It's a great interacting with you all. Thank you so much. So, Chandanji, are there any questions from the audience? Questions we don't have. We can have another round, sir. It's just a start round. Okay, we have time. So, okay, no problem. So the floor is open, and Goswami ji, if you want to make any additional comment, please. Ina ji, Neeta ji, anyone? You can just chip in here. We still have 20 minutes to go for this session, sir. Sir, actually, I want to convey one thing. Dr. Gupta and Mr. Chandan, I would like to take a leave. I have one meeting scheduled. Thank you so much interacting with all of you. Okay, no problem. Thank you so much for joining. Thank you. Yeah, great. Thank you. Thank you. Chandan sir, what is your view? I want to... yeah, Meenakumari ji, please. Yes, sir. Please switch on your video, ma'am. Can we see? Okay. Actually, during COVID pandemic, we have initiated a lot of trials, clinical trials, along with Siddha efficacy research-oriented programs in public. We have distributed Kabasara Kudineer, you may know it. It was very much popular among the people, and people themselves wanted to have Kabasara Kudineer, and they queued up in front of any AYUSH medical stores, like for Remdesivir. So you can through a comparative trial, you can assess our Tamil Nadu state COVID cases during the 2020 period, peak second wave period,
from the March to June, July, Tamil Nadu is likely to get very less number of mortality, because the state government of Tamil Nadu initiated one public program. They initiated COVID care centers by the Siddha doctors available in the state districts. Each and every district headquarters, we have COVID care centers, and we have treated mild and moderate cases. Through this, most of the 90% of the COVID positive patients were treated by the Siddha system, and the stage progression from the mild to moderate cases into severe is very much less when treated with Siddha drugs. Like so on, we have treated severe COVID patients at Changalpet Medical College Hospitals and SRM Medical College Hospital and Omandurar Medical College Hospitals. We have treated integratively along with allopathic medicine and Siddha medicine for the severe COVID cases. We found through this trial the mortality rate is 30% difference between the standard allopathic care and between the integrative Siddha system with allopathic care. So now, like that, we have integrative proposals in our NIAH Institute for PCOS, for cancer, for cardiac diseases, diabetes mellitus, obesity, n number of arthritis. So like that, we have 11 special OPDs. For 11 and the special diseases were treated by our special OPDs, and we have integrative approaches in that OPD centers. So there is a lot of scope for integration of AYUSH stream with allopathy, and better results we have to obtain through the scientific publications. Sure, we were aware, because we are very much below the standards, because we have to bring out our research proposal as per the scientific way. I am differing from Neeta madam, because people cannot, allopathy people cannot read our language, but we can read scientific language, scientific advancement and scientific proposals. So we have to develop our scientific research proposals according to the modern techniques, modern world. It is easy and very simple also. So we can bring our research proposal in a scientific manner. Then the scientific people can accept our outcomes. This is one thing I want to share with you, sir. This is the way we are practicing Siddha for the futuristic approach, sir. Thank you. Thank you very much, Meenakumari ji. Really appreciate your thoughts. Thank you. Thank you. Goswami ji? Yes. Any further thoughts? And नहीं, योग इतना सरल तरीका है अपने जीवन में अपना लेने का कि थोड़ा सा समय निकालना है। थोड़ा समय निकालना ही काफी है, और वो समय आपके लिए हो। यदि हम आधा घंटा अपने लिए दे दें और बाकी पूरा दिन हम समाज को दे दें, परिवार को दे दें, व्यापार को दे दें, ठीक है, चलेगा। लेकिन आधा घंटा तो हम कम से कम अपने को दे ही सकते हैं। हमने आधा घंटा अपने को दे दिया तो बाकी के 3.5 घंटे के ऊपर वो आधा घंटा हावी हो जाए। बहुत बढ़िया। अब 3.5 घंटे में बीमारी नहीं आए, क्योंकि आपने इस तरह से जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं और 10-15 मिनट पूरा चार्ज हो जाता है, पूरे दिन मोबाइल चलता रहता है। तो योग एक सरल तरीका है अपने आप को स्वस्थ बनाए रखने का। उम्र कोई हो, किसी भी उम्र में आप योग कर सकते हैं, कहीं पर हो आप कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि इतना सरलतम अभ्यास है, कुछ खर्च भी नहीं है। आप घर में हैं, बाहर हैं, छत पर हैं, पार्क में हैं, आप कहीं कार में हैं, आप ट्रेन में हैं, आप फ्लाइट में हैं, आप कुछ ना कुछ अभ्यास तो कहीं भी कर सकते हैं। अपने से जुड़ने के अभ्यास, क्योंकि योग क्या कर रहा है, हमारा शरीर, हमारी कॉन्शियसनेस के 5 लेयर्स हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश।
तो योग के अभ्यास हमारे हर स्तर को स्वास्थ्य देते हैं। यदि हम योग का अभ्यास रोज करना शुरू कर दें तो आप निश्चित मानिएगा अभी क्या होता है कि 40 साल का व्यक्ति 50 साल का दिखने लगता है, 50 साल का 60, बहुत जल्दी एजिंग फास्ट हो रही है, क्योंकि हमने अपने सिस्टम को समझा ही नहीं, क्योंकि हमने अपने को प्यार ही नहीं किया। और महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग का आरंभ होता है अहिंसा से। अहिंसा का मतलब है प्रेम करना। यदि हम अपने प्रेम के भाव में आ जाएं और सबसे प्रेम करना शुरू कर दें तो हम तो वैसे ही स्वस्थ हो जाएंगे। ये प्रेम ही तो नहीं है, इसलिए तो सारा बीमारियों की जड़ ये तनाव, ये क्रोध, ये चिड़चिड़ापन, ये झगड़े, ये अलगाव, ये घर घर में झगड़े हैं। एक अहिंसा, एक प्रेम का भाव, इसलिए महर्षि पतंजलि उसको फाउंडेशन कहते हैं कि यहां से योग का आरंभ होगा। यदि प्रेम ही नहीं है और क्रोध है, चिल्लाहट है, अहंकार से भरा हुआ है, भले कितने कठिन से कठिन आसन कर लो, से क्या होगा? परिवर्तन तो भीतर से हो। और फिर आप जब प्रेम से भरे होंगे तो जहां जाएंगे प्रेम ही बिखेरेंगे। जैसे फूल जहां जाता है अपनी खुशबू बिखेरता है। तो आप ही शांत हो गए, आप ही आराम में आ गए, आप ही हल्के हो गए, आप ही सरल हो गए, कोमल हो गए, मधुर हो गए, समभाव में आ गए, तो उसके बाद तो आप अपने पूरे सिस्टम को अलाइन कर रहे, सारा एंडोक्राइन सिस्टम आपका पूरी तरह से व्यवस्थित हो रहा है। तो यहां से योग का आरंभ होता है। और जब हम प्रेम के भाव में रहते हैं, और घर में आप प्रेम के भाव में रहें, क्योंकि वो योग की ऐसी प्रैक्टिस है जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, एक फिजिकल प्रैक्टिस है जो बहुत ही स्थूल स्तर पर होती है आसनों के माध्यम से, एक श्वासों की प्रैक्टिस है जो थोड़े और सूक्ष्म स्तर पर होती है प्राणों के माध्यम से, एक मेंटल प्रैक्टिस है जो मन के आधार पर होती है, एक इमोशनल प्रैक्टिस है, और एक हमारा जो स्पिरिट है, जो आत्म तत्व है, उसको जानने की प्रैक्टिस है। तो योग समावेश है सबका। आपको लगता है जहां पर कमजोर हैं हम, बस वही की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बीमारी उसी हिस्से से आने वाली है। जैसे दुर्योधन की मृत्यु शरीर के सबसे कमजोर हिस्सा, उसकी जंघा थी, वहीं से ही हुई थी। तो हमारा भी किसी भी स्तर पर कोई भी कमी, कमजोर हमारा पक्ष नहीं रहना चाहिए। इसलिए योग हमारा सर्वांगीण विकास करता है। जहां भी कमजोरी है जिस पक्ष में, चाहे वो शरीर के पक्ष में है तो आसन कर लो, श्वासों के प्राण के पक्ष में है तो प्राणायाम कर लो, मन के स्तर पर है तो ध्यान कर लो, धारणा के बुद्धि के स्तर पर है तो धारणा कर लो। किस भी स्तर पर आप कमजोर हो रहे हैं उसकी प्रैक्टिस थोड़ी बढ़ा दीजिए, और हम फिर योग के माध्यम से अपने को लगातार स्वस्थ रख सकते हैं। बीमारी आएगी ही नहीं, जरूरत ही नहीं है दवाइयों की, क्योंकि आयुर्वेद हमारे किचन में है। हम प्रकृति पूरी तरह से बाहर प्रकट है। आपको शुद्ध भाव रखकर अपनी दिनचर्या को, जो गीता में भगवान कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपनावबोधस्य योगो भवति तुखः। बस अपने आहार को ठीक कर लो, क्या खाना, कब खाना, कितना खाना, कैसे खाना, कब नहीं खाना। फिर विहार को, एक्टिविटी को ठीक कर लो, जो फिजिकल एक्टिविटी है। फिर अपने कर्मों को ठीक कर लो, दिन भर के अपनी चेष्टाओं को ठीक कर लो, और रात के सोने और सुबह जागने के समय को ठीक कर लो। ऐसा करते ही हमारी लाइफस्टाइल एकदम व्यवस्थित हो जाएगी। और फिर योग के अभ्यास, थोड़े से ही अभ्यास, थोड़ा सा ही टाइम एकदम 4 चांद लगा देगा हमारे व्यक्तित्व के निखार में, हमारे स्वास्थ्य में, हमारे वेलबींग में, हमारे वेलनेस को और ज्यादा बेहतर तरीके से ये योग मदद कर देगा। बस जरूरत है थोड़ा सा समर्पित होकर अपने ही लिए थोड़ा समय देने की। जैसे रोज घर में झाड़ू लगाकर फर्श को चमका देते हैं, दिन भर चमका रहता है। रोज नहाकर शरीर को चमका देते हैं, दिन भर चमका रहता है। कपड़े धोकर फिर दिन भर पहनते हैं, बिल्कुल साफ सुथरे रहते हैं। ऐसे ही योग के अभ्यास हैं जो पूरे शरीर को, शरीर के हर अंग प्रत्यंग को, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, प्राणों को, हर स्तर को चमका देते हैं, शुद्ध कर देते हैं, निर्मल कर देते हैं, और पूरा दिन के लिए वो तैयार हो जाते हैं और हम स्वस्थ रहते हैं। नहीं, बहुत ही बढ़िया। आप, मैं क्या बताऊं, आपसे तो बात करके मुझे लगता है कि वो चलता ही रहे आपका जो कन्वर्सेशन है। और जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि आपके चेहरे में एक अलग ही चमक सी है। तो आपने जो बोला है वो आपको उसको प्रैक्टिस भी करते हैं, और आई कैन वेरी वेल फील कि जो आपने हमें मंत्र दिया है कि अगर हम थोड़ा सा आधा घंटा भी एक अपने आप को प्रेम करते हुए थोड़ा सा ये कार्य करें, तो इट कैन बी रियली ग्रेट एंड बिकम, yoga also become part of who we are. And with a combination of the right mindset, the right diet,
the right, ahar, vihar, vichar and vishwas, we can really transform. And एक होता है कि हमें फिर उपचार की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम खुद एक उसका निदान कर रहे हैं एक अच्छे causes को create करते हुए. And so thank you so much, Goswami ji. It is really a music to our ears. थैंक यू Really, थैंक यू really चंदन appreciate. जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझको इनवाइट करने के लिए इस फोरम में। बहुत अच्छा। बहुत बल्कि हम लोग ये देखते हैं, जो ध्यान वाली भी जो बात है ना, ध्यान इज ऑल्सो सो इम्पोर्टेंट। कई बार लोग सोचते हैं जब टाइम मिलेगा तब हम करेंगे। जैसे मुझे कि लीडर हु यूज्ड टू से कि जिस टाइम पे मेरे पास बहुत डिफिकल्ट काम होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है मेरे को दिन हैंडल करना, तो उस दिन मैं कम नहीं ज्यादा ध्यान करता हूँ। ये नहीं कि जब हमारे पास टाइम अवेलेबल है तभी हम ध्यान कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि यू गेट सो मच ऑफ एनर्जी दैट व्हाट एवर थिंग इज लाइंग अहेड ऑफ यू, दैट यू आर एबल टू हैंडल इन अ मच बेटर वे। Neeta ji, we would like to come to you. Any additional points to make? Neeta ji. Okay, so Chandan ji, do you have any questions? Anybody? I think you are on mute, Chandan ji. Chandan ji, आप म्यूट पे हैं शायद। Just a minute. We can summarize this, just and last query from Guruji. Any Guru Gyan, Guruji, for the audience who are listening, क्योंकि सभी एज ग्रुप के लोग इसको विटनेस कर रहे हैं, मतलब हॉस्पिटल ओनर्स से लेकर कॉर्पोरेट के कुछ लोग हैं। आपने देखा जैसे कि हमारा हर एक सेक्शन गुरुजी जो है वो डिफरेंट सेगमेंट्स को हमने टच बेस किया। हॉस्पिटल्स को, क्लिनिक्स को, आयुष का एक सेपरेट पैनल हमने बनाया जिसमें आप भी शिरकत कर रहे हैं। उसमें आयुर्वेदा, फिर योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथ। हमने सोचा कि हर पहलू को, अगर ये न्यू नॉर्मल हेल्थ केयर वेलनेस समिट है तो वेलनेस, हेल्थ केयर, आयुष, फार्मेसी, इनफैक्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड कॉलेजेस, हमारा कल उसके ऊपर भी एक सेशन है सर, क्योंकि आखिरकार बच्चे तो निकलते मेडिकल इंस्टीट्यूट से ही हैं, चाहे वो फार्मेसी के लाइन में जाएं, या वो MBBS बने, या वो डेंटल बने, या वो योग गुरु आपको ही देखकर क्यों नहीं बने। पढ़ाई होनी तो पहले बहुत जरूरी है, उस बारे में ज्ञान होना, तजुर्बा होना बहुत जरूरी है। तो सब तबकों के लिए सर अगर कुछ एक गुरु ज्ञान अगर आपको देना पड़े, गुरुजी, जो भी आपके फॉलोअर्स हैं और जो आपको फॉलो करने लगेंगे आज से, जिन्होंने आपको विटनेस किया है, तो आप क्या बोलना चाहेंगे सर? कुछ मार्गदर्शन करें हमारा। जीवन में ना एक तो शुक्राना बढ़ा दीजिए, अंदर से थैंक्स, ग्रेटिट्यूड का भाव जब हमारे अंदर होने लगता है तो सारी शिकायतें खत्म हो जाती हैं। और जीवन में जब शिकायतें नहीं होती है तो मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है तो शरीर स्वस्थ होने लगता है। इसलिए शुक्राना दिन भर हमारे अंदर उस परम पिता परमात्मा का हो, उन लोगों का हो जो हमारे लिए सहयोगी हो रहे इस दिनचर्या में। दूसरा, मुस्कुराना बढ़ा दीजिए। चेहरे की मुस्कुराहट आपकी जितनी अच्छी होगी, मन उतना ही अच्छी तरह से शांत और ठहरा हुआ होगा। जब हम मुस्कुरा रहे होते हैं तो नेगेटिव थॉट नहीं होते। कभी भी आप मुस्कुरा कर देखें और सोचें किसी नेगेटिव थॉट को, किसी दुख और भय के विचार को, तो आप पाएंगे वो आ ही नहीं रहा है, क्योंकि जब मुस्कुराहट होती है तो मन सकारात्मक हो जाता है। और तीसरा, गुनगुनाना शुरू कर दीजिए। इसी गुनगुनाने से हमारे यहाँ पर मंत्र, चांटिंग मंत्रा, जितने भजन, कीर्तन, सत्संग की प्रक्रियाएं, गुनगुनाने की प्रक्रिया हमारे मन में लगातार चल रहे नेगेटिव थॉट को तोड़ने के लिए बहुत ही सहायक होती है। मन जब किसी ख्याल में उलझ जाए, गहरे डिप्रेशन में जा रहा हो, एक ही ख्याल को पकड़कर लगातार दौड़ रहा हो, तो आप गुनगुनाने से शायद मुस्कुराना ना तोड़ पाए, शायद शुक्राना ना तोड़ पाए, लेकिन गुनगुनाना तोड़ देगा। इसलिए हम कोई गाना गुनगुनाने लगते हैं और मन को शांत कर लेते हैं। ऐसे में कोई मंत्र यदि गुनगुनाना शुरू कर दें तो उस मंत्र की शक्ति हमारे शरीर में, हमारे मन पर उसका अपना एक अनुकूल प्रभाव डालना शुरू कर देगी। और चौथा, मैं चाहूंगा कि स्वीकारना, एक्सेप्टेंस। जो बीत गया है उसको स्वीकार करें। जब उसको हम स्वीकार नहीं करते और अस्वीकार भाव में रहते हैं तो बड़े दुखी रहते हैं, बड़े परेशान रहते हैं। जो बीता है उसमें रत्ती भर भी बदलाव हमारे द्वारा हो नहीं सकता। जो बीता है वहां से केवल एक्सपीरियंस ले सकते हैं, अनुभव ले सकते हैं।
तो इसलिए उसको स्वीकार कर ले। एक है स्वीकार और एक है परम स्वीकार। जो बीत गया उसके प्रति स्वीकार है, और जो आएगा घटेगा मैंने पहले से ही उसके प्रति परम स्वीकार किया हुआ है। अर्थात मैं पहले से ही अपने अंदर पूरी तरह से संतोष भाव में ठहरा हुआ हूं। जब हम संतोष भाव में होकर कर्मठ होते हैं, कर्म करते हैं, तो आराम से कर्म होते हैं। और जब असंतोष से कर्म करते हैं तो कितना भी आ जाए हमें थोड़ा ही लगने लगता है, हम हलचल में ही रहते हैं, कभी भी कंटेंट नहीं हो पाते, कभी तृप्त नहीं हो पाते, कभी पूर्ण नहीं हो पाते। जीवन पूर्णता में बहता है, अपूर्णता में नहीं। जीवन स्वभाव में बहता है, अभाव या प्रभाव में नहीं। इसलिए जितना अपने से जुड़ेंगे उतना हम स्वभाव में रहेंगे, उतना हम मुस्कुराएंगे, उतना एक्सेप्टेंस हमारे अंदर बढ़ेगा, उतना मुस्कुराना बढ़ेगा, गुनगुनाना बढ़ेगा और स्वीकार करना बढ़ेगा। ऐसे करके हम अपने पूरे व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे। और आधा घंटा रोज निकालिएगा अपने लिए, स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि आप हैं। आप केवल आप नहीं, आपका परिवार आपसे जुड़ा हुआ है। आप केवल आप नहीं, आपका संबंध आपसे जुड़े हुए हैं, आपका व्यापार आपसे जुड़ा हुआ है, आपसे ही सब कुछ जुड़ा हुआ है यहाँ पर। तो मेरे से जुड़ा है तो क्यों ना मैं अपने को ही फिट कर लूं। अपने को फिट करने से सब जो मेरे से जुड़ा है वो और बेहतर तरीके से होने लगेगा। व्यापार मेरे से जुड़ा है, मैं स्वस्थ हूं तो व्यापार में 4 चांद लगा दूंगा। मैं स्वस्थ हूं तो परिवार में मैं ध्यान दूंगा। मैं स्वस्थ हूं तो सब कुछ मैं आगे बढ़ा सकता हूं। और मैं ही अस्वस्थ हूं तो फिर सारी डोर कमजोर पड़ जाएंगी। योग हमें अपने से जोड़कर जीवन को सबसे ऊंचे स्तर पर जी जाना सिखाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो नहीं जानते हैं सर योग गुरु आपके बारे में, उनको मैं बताना चाहूंगा कि डॉक्टर सुरक्षित गोस्वामी जी, ही इज ए वेरी renowned yoga and spiritual master. इनके millions of followers हैं सर वर्ल्ड वाइड में। सिंस 1972 में सर का जन्म हुआ, हरिद्वार में वो जन्मे हैं। और तब से उन्होंने जो ट्रेनिंग ली है योगा की वो गुरुकुल कंगरी यूनिवर्सिटी हरिद्वार से ली है। और टाइम्स ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन से वो अभी जुड़े हुए हैं, वहाँ पर वो चीफ स्पिरिचुअल ऑफिसर भी हैं। ही इज एन ऑथर ऑल्सो। बहुत सारे बुक्स उन्होंने लिखे हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स और न्यूज़पेपर्स में उनके आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। डॉक्टर सुरक्षित जी ने प्रमोट किया है योगा को, स्पिरिचुअलिटी को टू द इंडस्ट्रियलिस्ट, जजेस, सेंट्रल गवर्नमेंट्स, ब्यूरोक्रेट्स। बहुत से सेशन उनके साथ में रहे हैं। तो सर जो अपने समय निकाल के गुरुजी आप यहाँ पर आए, हमारा मार्गदर्शन किया, और दिस वाज वन ऑफ द वेरी एप्ट पैनल। जो आयुष के हर सेगमेंट के लोगों को हमने लाके इसमें इंक्लूड किया है। और जिस तरह से पंकज जी ने इसको मॉडरेट किया, आई एम सो थैंकफुल पंकज सर। यू डू द जस्टिस टू एवरी सेशन वी पुट यू एज अ मॉडरेटर, चाहे वो एजुकेशन का सेशन हो या वो हेल्थ रिलेटेड सेशन हो। आपका इंक्लिनेशन towards spirituality and meditation हम तो follow करते ही हैं सर। We have been seeing you the way you preach the meditation and spirituality all over the world. आपने काफी वर्ल्ड टूर भी किया है इसको preach करने के लिए अपने बच्चों को और अपने नियर बाय एंड डियर वंस को। आप लोग इसके बारे में प्रेरणा भी देते हैं, सिखाते भी हैं। So thank you so much Pankaj sir for bringing out the vibrance and bringing out the best inputs, output from these eminent speakers. We need a mastery of being a moderator in any session. We should learn from you, Dr. Pankaj. So thank you so much, all the eminent panel speakers for this. Any closing remark, Pankaj, you would like? Sir, I'd like to say again very much thank you, and also thank you to Goswami ji, Neeta ji, Meena ji, Uma ji, and to Vidisha ji and everyone, that it was really a great session, and appreciate and admire. And और जो बात गोस्वामी जी ने कही, it has also touched my heart as well. और जो मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ ना कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, और बहुत से स्वभाव की ओर बढ़ो। और जो आज सर ने बात बोली ना कि शुक्राना, मुस्कुराना, गुनगुनाना, बहुत बढ़िया उन्होंने बोला। क्योंकि मैं अभी तक वो सूफिज्म वाले करता था ना, शुक्राना, सबराना, देन रजा में राजी और मुखलिस और इखलास बात करता था। तो आज मुझे कुछ और नई चीजें भी और सीखने को बहुत मिल गई। तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, बहुत ज्यादा मैं कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच चंदन जी एंड टू ऑल ऑफ। नमस्कार, थैंक यू। गुरु जी का हो रहा है सर कि शाम के 5-6 बजे भी वापस एनर्जी कैसे आ जाए। वी कैन ये दिस मैजिक ओनली गुरु जी इज हैविंग।
क्योंकि जनरली शाम होते होता तक ऑडियंस कम हो जाता है, वो एनर्जी कम हो जाती है. हमारा 120 ऑडियंस से शुरू हुआ था इवेंट, अभी वी कैन सी दैट इट्स 100 लोग निकल गए, केवल 20 पीपल आर रिमेनिंग. सो दिस इज काउंट द जो एनर्जी डाउन हुई थी. People have missed your speech, Guruji. I would just say that. जो लोग नहीं हमारे साथ जुड़ पाए, they just have missed a very important statement. Dr. Neeta, ma'am, thank you so much for joining in over here. आप बहुत एक important segment को represent कर रहे हैं और बहुत important part of country से आप ना represent कर रहे हैं North East, which is very important segment, especially अगर मैं आयुष की बात करूँ तो जो हर्ब्स है और जो आयुर्वेदा है, बहुत कुछ जो है उस पार्ट ऑफ कंट्री से आता है डेफिनेटली. एंड यू आर रिप्रेजेंटिंग वन ऑफ द वेरी उसको क्या बोलेंगे, बहुत इजी सेक्टर तो नहीं है मैम. आयुर्वेदा और होम्योपैथा आज की न्यू एज ऑफ लर्निंग में, न्यू एज ऑफ मेडिकल हिस्ट्री में अगर कोई इस फील्ड को अपना प्रोफेशन बनाता है, आई कैन जस्ट सैल्यूट टू द काइंड ऑफ मूव यू आर डूइंग. क्योंकि हर लोग उस तरफ जाना चाहेंगे जो ईज है, जो अंडरस्टैंड करने में आसानी है. जो डिफिकल्ट पार्ट है जैसे सिद्धा हो गया या आयुर्वेदा हो गया या होम्योपैथ हो गया या योगा हो गया. So I really admire and really have lots of respect for the people जिन्होंने अपने कल्चर को, ट्रेडिशन को, एक हेरिटेज को वो एनर्जी दे के रखी है और उसको प्रीच कर रहे हैं. और हम कोशिश कर रहे हैं कि आयुष का सेगमेंट जो है वो मेन स्ट्रीम लाइन ऑफ मेडिकल एजुकेशन में आए. So this is a great effort from the government and from the people like you, those who are trying to put this effort to bringing the Ayush segment into the main line of the medical education. So hats off to you, ma'am. All the best for the kind of work which you are doing. Let us know wherever you need a media voice for this segment to be preached. अगर आपने कुछ innovation किया है, आपके कुछ article हैं, कुछ news हैं, कुछ achievement आपके institute ने किया है, कुछ recognition किया है, कुछ book authored किया है, ArdorComm will be the first media company to publish that free of cost. Just that कि वो readers के interest में होना चाहिए. We'll be doing certain editing part and we'll be trying to. कुछ event अगर आपको करना है मैम, do reach out to us. We'll be helping us in making that and extending that event to a larger audience. उसको amplify करने में we can just help you out in that case. Thank you so much, Meena ma'am, for joining. Thank you so much, Pankaj sir, for joining us over here. Guruji, thank you so much. मैं आपसे वापस से संपर्क करता हूँ जिस तरह से हमने बात की थी सर पहले, how to get associated with you और हम लोगों को कैसे जोड़ सकें. आपकी बात हमें उन तक पहुंचानी है, Guruji. Thank you, Pankaj ji. Thank you, Pankaj ji. Thank you, sir. So before leaving, sir, एक छोटा सा gratitude. We would like to honor you with a certificate and appreciating your efforts which you're doing in your respective field. A gratitude say a small token of thanks, a certificate of appreciation to Swami ji, Dr. Surakshit Goswami ji, the Chief Spiritual Officer for Times of India Group, and also popularly known as Yog Guru. To you, sir. Thank you so much. Next. Certificate of appreciation to Professor Dr. Meenakumari ji. Next. She's there? Yeah. Meena ji, any remark to it? This certificate is presented to Dr. Neeta Mahesekar, Director, NEIAH, for participating as a distinguished speaker. Thank you, ma'am. The certificate goes to Professor Tanuja Manoj Nesari, Director, AIIA. Thank you, sir. Professor Dr. Bhardwaj, Vice Chancellor, Noida International University. Thank you for participating as a distinguished speaker. And to Professor Pankaj Gupta, Professor and Executive Director, Center of Ethics, Spirituality and Meditation, OP Jindal Global University, for participating as a distinguished speaker and moderating this session like always. Thank you so much.